Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. I'm back with today's lecture on eyelids and lacrimal apparatus. So let's just start with the lecture first. We'll discuss the eyelids. Eyelids are actually the covers of the skin which are present in front of eyeballs. The function of eyelids is to protect eyes from trauma or from excessive light exposure, right? The upper lid is actually larger and it is more mobile than the lower lid. Okay, just blink your eyes and feel that which part is moving more. That's the upper part, right? And there is a slit in between the two lids, with the slit which is dividing the upper lid from the lower lid. This slit is known as palpebral fissure. Okay, the palpebral fissure, it meets at the two extreme angles. The inner one is the medial angle of eyelid and the outer one is the lateral angle of the eyelid, right? The superficial surface of the eyelids is covered with skin. ये बाहर की तरफ देखो skin, ठीक है, ये यहाँ turn किया हुआ है, outer side is the skin, right? And the deep surface is covered by a mucous membrane known as conjunctiva. अंदर ये inner layer दिखा रहे हैं, this is covered by a mucous membrane, इसका नाम होता है conjunctiva, right? So outer we have the skin, outer side of both the lids, and inner side we can see the conjunctiva. As far as the movement of eyelids is concerned, the eyelids are opened and closed by the action of two muscles, right? When the eyelids are closed, it means orbicularis oculi is functioning. The orbicularis oculi muscle contracts when the eyelids are closed, right? The nerve supply of orbicularis oculi is facial nerve, and when the eyelids are opened, इसमें कौन सा मसल एक्टिव होगा? इसमें लिवेटर पैल्पेब्री सुपीरियोरिस contract करता है, and when it contracts, it elevates the eyelid so that the eyes are opened, right? Here we can see in this picture, this is levator palpebris superioris, closed eye go, when it contracts it opens, ठीक है? And here this is orbicularis oculi, when it contracts it closes the eyelid, ठीक है? Now the conjunctiva जो भी हमने बात की, that's the layer of mucous membrane lining the inner side of eyelids, right? So what happens, there is the reflection of conjunctiva onto the anterior surface of eyeball as well. अंदर वो eyelid पे भी था, इधर see the cursor, अंदर eyelids पे भी है, और now इसकी एक वो जो लेयर है वो रिफ्लेक्ट होके eyeball की भी फ्रंट पे आ रही है, राइट? सो ये ऊपर से जब ये रिफ्लेक्ट बैक होके नीचे आने लग जाएगी, वो वाला हमारा जो बेंड होगा वो सुपीरियर फॉर्निक्स हो जाएगा, ठीक है? एंड लाइकवाइज ये नीचे वाली लिड की इनर सरफेस से जाके फिर रिफ्लेक्ट होके वो जो इस सरफेस पे आईबॉल के आ रही है, यहाँ पे इंफीरियर फॉर्निक्स हो जाएगा, ठीक है? सो वी हैव टू फॉर्निसेस, द सुपीरियर फॉर्निक्स एंड इंफीरियर फॉर्निक्स. सो इट इज़ एक्चुअली द बेंड or fold from where the conjunctiva turns or reflects onto the eyeball, right? Coming from the deep surface of eyelids and then reflecting upon the anterior surface of eyeball. The epithelium of conjunctiva is continuous with that of the cornea, right? This is the region of cornea, this is the sclera, यहाँ पे पूरा इस पे hypus conjunctiva आ जाएगा, right? And it forms a potential space known as conjunctival sac, जिसका palpebral part है conjunctiva का, और हमारे पास जो इसका बल्बर पार्ट है. पैल्पेब्रल पार्ट वो वाला पार्ट होगा जो आईलिड को लाइन कर रहा है, ठीक है? दिस वन एंड दिस वन, दिस इज़ द पैल्पेब्रल पार्ट एंड दिस इज़ द बल्बर पार्ट विच इज़ lying in front of the
आईबॉल, राइट। तो ये दोनों पार्ट्स जहाँ पे वो रिफ्लेक्शन इसकी हो रही है, फॉर्नेसेस बन रहे हैं, इन दोनों पार्ट्स के बीच में एक पोटेंशियल स्पेस होती है, दैट स्पेस इज नोन एज कंजक्टिवल स्पेस, सैक, राइट। Then over the eyelids we can see short curved hairs on the extreme edges. उसको हम क्या नेम करेंगे? These are eyelashes. These eyelashes, these are arranged in double or triple rows at the mucocutaneous junction. By mucocutaneous we means mucous membrane and skin. So we have already discussed that the skin outer part of eyelid is lined by skin and the inner part of eyelid is lined by conjunctiva, which is the mucous membrane, right? So mucocutaneous junction कौन सा हो गया? जहाँ conjunctiva and skin are meeting. So eyelashes are usually growing in this region. Then there are few glands which are associated with eyelashes. The first one is the glands of Zeiss, which are the sebaceous glands. They open into the eyelash follicles. Right here we can see the glands of Zeiss. Wait, right? The follicles के पास यहाँ glands of Zeiss होते हैं, sebaceous glands. ठीक है. Then we have ciliary glands, that is glands of moles that opens separately between the eyelashes. I have a very good picture of this in the end. I'll show you all the glands in that as well, okay? This picture is not that good. Okay, so in between the lashes हमारे पास glands of moles भी मिलेंगे, ठीक है? ये ciliary glands होते हैं. And then we have the tarsal glands. Tarsal glands open behind the lashes, ठीक है? And they pour oily secretions onto the margin of eyelid. यहाँ पे अपनी oily secretions margin पे pour down कर देंगे, right? Now we'll discuss the structure of lacrimal apparatus. This apparatus is concerned with the secretion and drainage of tears or lacrimal fluid. ठीक है, सिक्रीट भी करना है और उसकी प्रॉपर ड्रेनेज भी होनी है वाया लैक्रिमल अपैरेटस. किसकी? लैक्रिमल फ्लूइड और टेयर्स, राइट. फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस द टेयर फिल्म. टेयर फिल्म की एक्चुअली 3 लेयर्स होती हैं. आउटर मोस्ट लेयर इज सिक्रेटेड बाय द मेबोबियन ग्लैंड्स, जो अभी हमने सिक्रेट ऑयली सिक्रेशंस की बात की थी, ठीक है. दिस लिपिड लेयर प्रिवेंट्स इवेपोरेशन ऑफ द tears, the underlying layers of the tears, right? So it keeps the area of the cornea continuously moist. The middle layer consists of aqueous tears from the lacrimal gland. These tears provide nutritional help to the avascular part of the eyeball, right? Then the innermost layer is composed of mucus, which provides stability to the tear film as well as lubrication, and it also functions to trap and remove the debris. जिस तरह म्यूकस हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में म्यूकस कैसे ट्रैप करता है फॉरेन पार्टिकल्स को, डस्ट पार्टिकल्स को, राइट. लाइकवाइज आइज के लिए दिस म्यूकस लेयर इज परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन, राइट. Now this picture shows the proper circulation of tears, that how it is being produced and how it is processed and drained forward, right. See, it is produced by the lacrimal gland over here, ठीक है. लैक्रिमल ग्लैंड से लैक्रिमल डक्ट्स के थ्रू टेयर्स जो है ये इस कंजक्टिवल सैक में आएंगे. यहाँ से इट विल फ्लो डाउनवर्ड्स एंड इनवर्ड्स, मीन्स मीडियली जाएंगे अप टू लैक्रिमल पंक्टा, ठीक है. दीज आर दी लैक्रिमल पंक्टा, राइट. दीज आर दी लैक्रिमल पंक्टा. अब यहाँ से आगे इसकी फर्दर ड्रेनेज होगी, राइट.
जब न्यूबॉर्न बेबीज़ को पीडियाट्रिशियंस काजल एंड सुरमा लगाने को मना करते हैं, तो दिस इज़ द रीज़न टू नॉट टू अप्लाई दैट काजल और सुरमा, बिकॉज दैट काजल और सुरमा it blocks the puncta of the lacrimal apparatus, and because of the blockage the drainage of the tears it gets hindered, right? Okay, so with each blink of the eye what happens, the tears are pushed across the eye towards the puncta. यही इसकी मूवमेंट की जो एरो दिखाया हुआ है इस तरह से मूवमेंट हो रही होगी, सही है। लैक्रिमल ग्लैंड इस तरह से विद ईच ब्लिंक टुवर्ड्स मीडियल एंगल यहाँ पे tears जा रहे होंगे puncta की तरफ, right? From the puncta the tears will enter into the lacrimal canaliculi, ठीक है, these are the canaliculi. From the canaliculi they enter into the lacrimal sac, this is the lacrimal sac, and from the lacrimal sac it will be drained via nasolacrimal duct into the nasal cavity, right? और फिर नेजोफेरिंग्स वाले एरिया से वो पे थ्रोट में भी टेयर्स जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पीछे से नेजोफेरिंग्स इज द ओपन पैसेज, राइट? वहाँ से भी टेयर्स दे माइट ड्रेन अप इनटू द थ्रोट रीजन, बट दिस इज द मेन exit point which is nasolacrimal duct opening into the inferior meatus of nose, right? So this is how the tears are produced and then circulated up to the nasal cavity, ठीक है, from the lacrimal gland into the eye, through the lacrimal puncta and lacrimal canaliculi into the lacrimal sac, and through nasolacrimal duct into the nasal cavity. So all these structures they comprise the lacrimal apparatus, ठीक है. So just pause the video right now and write it somewhere without looking on the slide. Just recall all the parts and write it in anywhere in your books, right? So I repeat again, the lacrimal apparatus, it includes the lacrimal gland along with the excretory ducts, we can see in the picture as well. After this the conjunctival sac, जो हमारे दोनों layers के बीच में space है, that is the conjunctival sac. Then the lacrimal puncta, the lacrimal canaliculi, lacrimal sac, and the nasolacrimal duct. Now let's discuss about the variety of lacrimal gland. It is a serous gland which is situated in the anterolateral part of the roof of the bony orbit and partly on the upper lid. Now look at the picture first, the one just beneath the text here, ठीक है. बात क्या हुई कि it is in the anterolateral part of the roof of the bony orbit. This is the region of bony orbit, right? तो यहाँ orbit का roof है like this. देखो यहाँ पे bony orbit दिख रहा है, ये skeletal bony picture देखो, ठीक है. And now when we look at it we can see two parts of it, ठीक है. तो इसका थोड़ा सा part फिर palpebral part भी होता है जो upper lid पे आ रहा है, ठीक है. This is the palpebral part. Okay, now this lacrimal gland we can see that it is indented by tendon of levator palpebrae superioris. See in the picture, okay, that this picture is showing the levator palpebrae superioris muscle with its tendon going deep inside into the lacrimal gland, ठीक है. So this lacrimal gland is actually being traversed by the tendon of levator palpebrae superioris, right? I hope the voice is clear. So the parts of lacrimal gland जो हम बात कर रहे थे, this part which is lying
डीप इन द बोनी ऑर्बिट इज़ द ऑर्बिटल पार्ट, ठीक है, क्योंकि वो ऑर्बिट के पास है, उसका नाम उसी से मिलता हुआ रख दिया है, दैट इज़ द ऑर्बिटल पार्ट। एंड दिस विच इज़ रीचिंग अप टू द लिड, उसको हमने पैल्पेब्रल पार्ट कह दिया, ठीक है। सो दिस इज़ द ऑर्बिटल पार्ट विच इज़ लार्जर एंड मोर डीपर, एंड दिस पैल्पेब्रल पार्ट इज स्मॉलर एंड इट इज़ मोर सुपरफिशियल, राइट। The lacrimal gland, it shows approximately 12 ducts piercing the conjunctiva of the upper lid, opening into the conjunctival sac near superior fornix, and most ducts they pass through the palpebral part. ठीक है, again see this picture first, the lower one. ठीक है, पेल्पेब्रल पार्ट से ज़्यादातर डक्स निकल रही हैं और वो क्या कर रही हैं, टीयर्स को हमारे कंजक्टिवल सैक में पोर इन कर रही हैं, ठीक है। So here this part and this part, these are the fornices, superior fornix and the inferior fornix। हमने बात की थी superior inferior fornix क्या होते हैं, वो पॉइंट, वो बैंड जहाँ पे इसका पेल्पेब्रल और बल्बर पार्ट मीट कर रहे हो, ठीक है, और इनके बीच की जो स्पेस हो गई वो हमारे पास कंजक्टिवल सैक हो गई, ठीक है। तो इसी में हमारे पास टीयर्स जो हैं फ्लो करेंगे, ठीक है। The blood supply of lacrimal gland is via lacrimal branch, which is the branch of ophthalmic artery, right. The nerve supply is via lacrimal nerve, and if you remember हमने ये पढ़ा था न्यूरो में कि how the zygomaticotemporal nerve, it gives the branch to the lacrimal gland and provides the supply, remember, ठीक है। So that's the supply, the nerve supply for lacrimal gland. Now let's discuss a little about conjunctiva. कंजक्टिवा के हमने दो पार्ट्स पढ़े थे, पैल्पेब्रल एंड बल्बर। बल्बर कौन सा पार्ट हो जाएगा, बल्बर हमारे पास पार्ट है जो आई बॉल की फ्रंट पे है, ये जो स्क्लेरा को कर रहा है, ठीक है, स्क्लेरा को लाइन कर रहा है, और इसका एपिथेलियम जो है कंटिन्यूस विद कॉर्निया हो रहा है, ठीक है। यहाँ पिंक पार्ट है, दिस इज कंजक्टिवा, राइट। तो कॉर्निया के साथ जो कंटिन्यूस हो रहा है, दिस इज द बल्बर पार्ट जो स्क्लेरा को कवर करके कॉर्निया के साथ कंटिन्यूस हो रहा है, राइट। इसकी एपिथेलियम कॉर्निया के साथ कंटिन्यूस हो जाती है, एंड दिस the layer which is lining deep inside the lids is the palpebral part, ठीक है। और इन दोनों के बीच की जो स्पेस हो जाएगी that is the conjunctival sac, right. So the palpebral part which is lining the deep surface of eyelids, it is thick, opaque and vascular, and it is tightly adherent to the tarsal plate, right. The bulbar is thin, transparent, and it is loosely attached to the eyeball, loosely attached होती है ये sclera of the eyeball से। Now look at this picture, this half, the right half is showing the regions of a conjunctiva by colors, ठीक है। ये पर्पल कलर बल्बर कंजक्टिवा शो कर रहा है और ब्लू कलर पैल्पेब्रल कंजक्टिवा शो कर रहा है, ठीक है। लेफ्ट हाफ इज शोइंग द नॉर्मल लुक ऑफ द आई, राइट हाफ में उसको कलर्स डिफरेंट करके आपको पार्ट्स ऑफ कंजक्टिवा बताया, ठीक है। दिस इज हाउ द नॉर्मल आई अपेयर्स, राइट, द लेफ्ट पोर्शन, ठीक है, और राइट पोर्शन में ये पार्ट्स अलग शेड करके दिखाए हुए। So the conjunctival sac is the space between the palpebral and bulbar parts. So this we have already discussed, and the significance of this is कि हमारा सारा tears and everything it comes within this sac, and due to this the protection of eyeball is happening. Fornices we have discussed, upper and lower fornix, this is the upper fornix, this is the lower fornix। fornix कब होगा, जब palpebral और bulbar आपस में यूनाइट कर रहे होंगे, मीन्स रिफ्लेक्ट होके जब palpebral वहाँ जाके bulbar बन रहा होगा, तो that bend is the, that U-turn is the fornix, right। Okay, coming to the lacrimal puncta, we have two puncti,
superior and inferior, present on the on lacrimal papillae near medial canthus of the eye. सही है, अपने सब अभी लैक्रिमल पंक्टा देखना लेक्चर के बाद, ठीक है. दीज आर द टू पंक्टा. सिंगुलर इज पंक्टम. ठीक है, अब ये पंक्टा से आगे कैनालिक्यूलाई में जाएंगे. ठीक है, पिक्चर में जो हमने कैनालिक्यूलाई देखे थे वो स्ट्रेट लाइन दिख रही थी, बट व्हेन वी लुक एट इट मोर एट मोर जूमिंग इफेक्ट, उसमें क्या है कि लैक्रिमल कैनालिक्यूलाई के भी दो पार्ट्स हैं. एक वर्टिकल पार्ट होता है, एक हॉरिजॉन्टल पार्ट होता है. द वर्टिकल पार्ट इज स्मॉलर एंड द हॉरिजॉन्टल पार्ट इज ग्रेटर. ठीक है, इस तरह पहले जो है लैक्रिमल पंक्टा इट ओपन्स इनटू द वर्टिकल पार्ट, देन द फ्लूइड गोज फॉरवर्ड इनटू द हॉरिजॉन्टल पार्ट, देन इट एंटर्स इनटू द लैक्रिमल सैक. ठीक है, और हमारे पास जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पार्ट है उसके बीच में थोड़ा सा डायलेटेड पोर्शन होता है विच इज़ नॉट ऑब्वियस इन दिस पिक्चर. सो दैट डायलेटेड पोर्शन इज़ नोन एज एम्पुला. जो ऊपर वाले पंक्टा के साथ होगा वो सुपीरियर एम्पुला हो जाएगा, जो नीचे वाले पंक्टा के साथ होगा वो इंफीरियर एम्पुला हो जाएगा. राइट, नाउ दिस कैनालिक्यूलाई ओपन ऑन टू द लैक्रिमल सैक. ठीक है, लैक्रिमल सैक में ओपन होगा एंड देन लैक्रिमल सैक से आगे वो किस में जाएगा, नेजो लैक्रिमल डक्ट में. अच्छा, जो पोजीशन है लैक्रिमल सैक की, इट इज़ लाइन बिहाइंड द मीडियल पैल्पेब्रल लिगामेंट. राइट, so this sac is the membranous sac and it is situated in the lacrimal groove behind the medial palpebral ligament. इसका जो upper end है ये blind end होता है. yes, follow this cursor. ठीक है, ये blind end होता है और lower वाला end obviously continuous हो रहा है as nasolacrimal duct. open कहाँ होगी, nasolacrimal duct. ओके, जिसने आंसर दिया है inferior meatus, that's correct. और जिसने आंसर नहीं दिया है वो सुन ले दैट इट इज़ इंफीरियर नेजल मीएटस. राइट, ओके, दिस पिक्चर पहले पूरी स्कल देखो. ये जो ग्रीन पार्ट दिखाया हुआ है दिस इज शोइंग द लैक्रिमल बोन एंड हियर वी कैन सी द लैक्रिमल बोन, जिसमें हमें लैक्रिमल सैक का वो दिख रहा है, ग्रूव दिख रहा है. ठीक है, now the nasolacrimal duct, it starts at the lower end of the lacrimal sac and it runs downward, opens into the inferior meatus of the nose. इस पे एक incomplete valve होता है, that valve is known as valve of Haysner's. ठीक है, और valve का हमेशा क्या काम होता है, providing the unidirectional flow. Right, so this is the incomplete valve, so it's of not that great importance, but you should know it. ठीक है, so the name for this is valve of Haysner. Then in addition to the aqueous tears जो हमारा lacrimal gland itself is producing because that's a serous gland, उसके अलावा हमारे पास कुछ accessory glands भी हैं जो secrete कर रहे हैं oily and mucus tears. ठीक है, the meibomian glands they secrete the oily tears. ठीक है, ये जो tarsal plate में थे, ठीक है, ये meibomian glands हैं जो tarsal glands हैं. राइट, दिस इज़ द पिक्चर विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट कि इसमें मैं आपको सारे ग्लैंड्स सिखाऊंगी. ठीक है, देन वी हैव द ग्लैंड्स ऑफ ज़ीस. ग्लैंड्स ऑफ ज़ीस हमारे पास ये रहे जो फॉलिकल्स के साथ हैं. ठीक है, ये वही ग्लैंड्स जो अभी हमने आई लैशेस के ग्लैंड्स पढ़े थे. राइट, ग्लैंड्स ऑफ ज़ीस. देन ग्लैंड्स ऑफ मॉल, ये मॉल्स किस थे, दो लैशेस के बीच में थे. ठीक है, ग्लैंड्स ऑफ मॉल्स हो गए. देन वी हैव ग्लैंड्स ऑफ वुल्फ्रिंग. दिस इज़ द वुल्फिंग नहीं है, दिस इज़ वुल्फ्रिंग. ठीक है, ये हमारे पास ग्लैंड्स ऑफ वुल्फ्रिंग है जो टॉर्सल प्लेट्स के बिहाइंड होते हैं. एंड देन वी हैव द ग्लैंड्स ऑफ क्रोजी. ठीक है, दीज आर द ग्लैंड्स ऑफ क्रोजी जो हमारे पास ये सारे क्या करेंगे, स्टिकी कंपोनेंट ऑफ टीयर को प्रोड्यूस कर रहे हैं. ठीक है, सो मेबोबियन जो है ऑयलीनेस एंड दीज will be producing the stickiness of the tears. और ये इन सब की significance क्या है, being oily and sticky, that it provides
the evaporation of the aqueous layer, the middle layer, ठीक है। ये कौन सा कर रहा होगा, ये मेबोबियन ग्लैंड वाला कर रहा होगा जो ऑयली है, राइट। और जो स्टिकी है, म्यूसिन है, म्यूकस वाले हैं, वो क्या कर रहे होंगे, वो ट्रैप करेंगे, दे आर हेल्पफुल इन ट्रैपिंग द डेब्रिस फ्रॉम द आई, ठीक है, और सरफेस को मॉइस्ट रखेंगे। A little clinical correlates about this. There is a term known as epiphora. Epiphora means excessive flow of lacrimal fluid or tears from the eyes. ठीक है। अब खुद से आप सोचो कब हो रहा होगा एक्सेसिव, जब पंक्टा बंद है, ठीक है। when the puncta is blocked, आगे उसकी further drainage नहीं हो रही है, तो फिर ओवरफ्लो होगा, डिस्चार्ज होगा फ्रॉम द आई, ठीक है। देयर दिस राइट साइड इज शोइंग द नॉर्मल पैसेज, नॉर्मल ड्रेनेज, और यहाँ पे जब ब्लॉक्ड है नेजोलैक्रिमल डक्ट, अच्छा ब्लॉकेज कैन बी एनीवेयर इन द पैसेज, ठीक है। इट कैन बी ओवर द पंक्टा, इट कैन बी इन द लैक्रिमल सैक, इट कैन बी इन द नेजोलैक्रिमल डक्ट, राइट। सो ड्यू टू blockage anywhere in the passage, this occurs, watery eyes, tears की वहाँ से overflow हो रहा है, ठीक है। Then there is another term known as dacrocystitis. Now dacrocystitis is a term used for inflammation of the lacrimal sac, and this is how it presents, right? So this was all for today. We discussed the structure of eyelid. We discussed the structures related to eyelid, the eyelashes, the conjunctiva, the parts of conjunctiva, the glands present near the eyelashes, and then we discussed the proper anatomy of lacrimal apparatus, the components of lacrimal apparatus, their functions, and their locations, right? So this is all from my side today. Inshallah we'll meet in another lecture. Till then, Allah Hafiz, take care.